You still stand by the fact that absolutely BJP will not cross 100. If they cross 100, I repeat on your show, I will quit this space, meaning my work, forever. Will you contest elections then? now you say that whether you're going to jump in a well. No. Why? You think politics and fighting elections is jumping in a well? No. I'm saying people can extend that. I'm saying if I fail to deliver in what we are set out to, which is to win Bengal decisively, I have no business to do what I'm doing or claim to do what I supposedly I'm able to do. Prashant Kishor, and I have to be honest on that. And I mean it. You can hold me on this, and I'm not someone who moves around with jet plus security. I pick my own phone, so after election you can find me and hold me accountable. I found you and we met in the queue of Tirupati. Yes. Last year. After winning that state, I still go there in the queue only. Yeah. तो हम उसी queue में मिले थे और मैंने उस समय भी आपसे पूछा था. I know it's a personal anecdote, but I was asking you at that stage. You were not formally looking after West Bengal, as the political aid. And you said BJP has an edge at that time. Yes. You think you've been able to take away the edge? Didi has been able to do whatever was needed, or I would say almost everything that was needed to be done on her part. She has been proactive. She has been doing both as a chief minister and the leader of TMC. 1 year and a half, as you as a political journalist, you understand, it's a very long time. Post Lok Sabha, there has been a great deal of effort on the part of Trinamool and its leadership, and they are much better placed today to win Bengal than what they were probably in May 2019. If Didi has been so confident and poised about her victory. One last thing on this, who has got me here, just to put facts correct here. Now you're on the defensive. No, I'm not. Because you are. No, I'm not. Let me put the facts. Abhishek Banerjee और प्रशांत किशोर का जो combination है, ये तृणमूल में भगदड़ मचा रहा है. In BJP, Amit Shah ji calls all shots. Is it to say that Mr. Modi has become redundant? If someone is calling a shot in a party or someone is important in important. So you're saying Abhishek Banerjee calls the shots? No, I'm saying something else. But you are jumping on it. I'm saying that any leader who operates, they will operate with some aids, and some aids would be important. That does not mean that leader does not exist. Just because Mr. Amit Shah is running the affairs of BJP, that does not mean that Mr. Modi is retiring or he is handing over the power to Mr. Amit Shah. Can we say that? If you cannot, then do not accuse, as he accused, that Didi to Mukhyamantri chhodne wali hain, wo Abhishek ko banane wali hain. This is outrageous claim to make. One can make from Trinamool the claim that now all the calls in BJP are taken by Mr. Amit Shah. So Mr. Modi is leaving. He will hand over the charge to Mr. Amit Shah. एक तरफ आप कहते हैं small time political aid, and you are giving lessons to people. Don't punch above your weight. No, I'm talking. और आप मोदी और अमित शाह से कम बात ही नहीं करते हैं, तो ये आपसे लोग पूछेंगे कि कल आप मोदी जी के एड थे, आज आप उनके चैलेंजर. मैं कहाँ उनका चैलेंजर हो सकता हूँ? मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ. उन्होंने ऐसा आकर कहा, अमित शाह जी ने ऐसा कहा कि दीदी अब तो सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं कि वो अभिषेक को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, और उसके सपोर्ट में उन्होंने और आपके जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक कॉल्स ऑल द शॉट. आई एम गिविंग यू एन एनोलॉजी दैट इफ दैट इज ट्रू, then Mr. Shah is calling all shots of BJP since 2014. So are we to say that Mr. Modi does not exist? Well, any top leader will work with some people around him or her. I want to ask you another direction of the reason why the TMC looks like it is rattled. And let me point out a few instances. It is looking rattled in the eyes of those who are sitting in Delhi. चलिए आप घर वाले बाहर वाले जो हमको बुला लीजिए. आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं नैरेटिव. घर वाले बाहर वाले. I have not said it. हर इलेक्शन में आप हम जैसे दिल्ली के जर्नलिस्ट को तो ऐसे गाली दी जाती है जैसे हमें तो कुछ नहीं हमेशा ही कहा जाता है. अगर बिहार का इलेक्शन हो, अरे दिल्ली में बैठे आपको क्या पता, तमिलनाडु का इलेक्शन, अरे दिल्ली में बैठे आपको क्या पता. But see, कभी आप सही होते हैं, कभी हम भी सही हो जाते हैं. I think there is not too much of a give and take in terms of the overall scorecard. But let me ask you, चाहे मैं गलत हूं या सही, मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं ये हक रखती हूं सवाल पूछने का. मेरा हो सकता है जो आपको फायदा ये भी है कि जब चुनाव का रिजल्ट आपके कहे के अनुसार न आए
तो तुरंत आप दूसरे साइड हो जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं? तो क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मेरा अधिकार है, बिल्कुल मेरा अधिकार है और मेरी ड्यूटी है। Yes. मेरी ड्यूटी है टू आस्क बोथ साइड्स द टफेस्ट क्वेश्चंस पॉसिबल एंड गिव द काइंड ऑफ सिनेरियोस दैट आई शुड टू द पीपल फॉर देम टू नो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। Did I tell you not to ask me any tough question? So मैं आपसे, ask me whatever you want to ask. नहीं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आपको मैं डिफेंसिव लग रहा हूं, मेरे को ऑफेंसिव होना पड़ा बताने के लिए कि हर वक्त दिल्ली के पत्रकारों को गाली देने से आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी। गाली कौन दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, क्योंकि आप हमें लिंक कर देते हैं बाहर से आने वाले लीडर्स और दिल्ली से आने वाले पत्रकार। मैं भी बाहर से हूँ, मैं भी तो बंगाल का नहीं हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन मैं यहाँ 1 साल से हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई। बिल्कुल। अब मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। जो पॉलिटिशियंस आके, मान लीजिए आप 5 दिन के लिए बंगाल में आए, कुछ शहर घूमे, कुछ लोगों से बात करी, उसके आधार पे आपने कह दिया ये पार्टी इतनी सीट जीत रही है। शायद संभव है 10 बार में एक बार आपका तुक्का लग भी जाए, लेकिन उसका कोई मेथड नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो। इट्स अ वेरी बिग, ऑल आई एम सेइंग इज अ लार्ज स्टेट complex. It's not so easy to call election even in a small state like Delhi. Even in Haryana, it's not easy. Possibly the smallest state.